dilute or concentrated solution. Next, identify and label in a simple electrolytic cells the anode positive, cathode electrolyte, and the direction of the flow of electrons in the external circuit. Next है हमारा write a chemical reactions that occur in Nelson sense. Why is tin plate steel used to make food cans? ये बहुत important question है जो mostly paper में पूछा जाता है. Explain one example from the daily life which involve an oxidation reduction reaction. Next है हमारा define electrochemical series and write down the importance. Why does chlorine gas form at the anode during the electrolysis of molten lead to chloride? How do salt conduct electricity when molten or in solution form? What happens to the ions in an ionic compound when does dissolve in a water? How can you prepare a soluble salt using an excessive of an insoluble base? What is peroxyacetyl nitrate and how it is formed? ये भी बहुत important question है, इसको भी आपने prepare करना है. Next है write the balance equation for the production of ammonia in the Haber process. What are the typical conditions, temperature, pressure, catalyst for the Haber process? How is the sulfur dioxide produced from for the contact process? ये भी question आपका बहुत important है. Next अगर हम देखें state the balanced chemical equation for conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide. Explain why protein considered natural polyamide. Next, how is ethanol used in cosmetic product and why? Next है write the balanced chemical equation for the reaction between ethanoic acid and sodium. Next है हमारे पास describe how ethanol can be formed from ethanol using an oxidizing agent. Explain the industrial use of ethyl acetate. Next है write the chemical equation from the esterification reaction between the methanol and ethanoic acid. Next है हमारे पास what happen when the carboxylic acid react with the base and provide a general reaction. Explain what is meant by the addition polymerization. Explain one environmental challenges associated with the disposable plastic in landfills. Next अगर देखें तो write the structure of PET and nylon 66. Write down the two environmental challenges associated with plastic disposable. How are the additional polymers formed from monomers? नेक्स्ट है हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर से है सॉरी बायोकेमिस्ट्री के. हाउ डज द बॉडी मेक्स प्रोटीन? What do vitamins do for our body? How do parents protect their children from genetic disorders? Last जो है वो अगर हम देखें explain why the temperature remain constant during the phase change from ice to water. What is the difference between evaporation and boiling? ये question भी बहुत important है. Interpret heat and cooling curves in terms of kinetic energy. Explain the effect of increasing temperature on the pressure of gas in a seed container. Examine qualitatively the effect of molecular mass and the temperature on the rate of diffusion. Interpret the heating in terms of kinetic particle theory, the effects of changing pressure, temperature, and the volume of gas, and on the other two with regards to Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. नेक्स्ट है हाउ डू एवोगैड्रोस लॉ रिलेट टू द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन. ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है. इफ यू डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ NaOH in 1 decimeter cube of solution, calculate its molarity. नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन मोलैरिटी, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला. नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल मेकअप ऑफ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 5.6 ग्राम ऑफ KOH in 1 decimeter cube of solution. कैलकुलेट द मोलैरिटी. नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. How do hydrogen oxide fuel cells benefit the environment as compared to gasoline engine? Sketch Daniel cells with
labeled component and indicates the directions of electron flow। अच्छा, ये आपने जो सेल है इसका डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है, इनके कंपोनेंट्स को मस्ट लेबल करना है, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी एंड शो द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। Next step, what is the effect of catalyst on the following: rate of reaction and the energy of activation. Why powdered zinc react faster with acid than a piece of zinc? Give reason. Next है हमारे पास the list of the chemical parameters that are affected by reaction rate. Explain Coulomb theory and its key component. Discuss the effect of changing the concentration of reactant on the rate of reaction. Why does only a fraction of Coulomb leads to the reaction during Coulomb theory? Explain how increased activation energy affects the rate of reaction. Suggest a way to identify if the catalyst has been effective in the reaction. Then next है हमारे पास the assess of impact of catalyst on the industrial chemical process. Why do salt energy have high melting point? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फ्री फायर खेलते हो और फ्री रिवार्ड मिस करे हो तो इस रील को। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एज ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। डिस्क्राइब द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइंस के आपने देखे थे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड्स इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the acidic oxide? Give 2 examples. How can you distinguish between alcohol and carboxylic acid by the structure formula? जितने भी functional groups हैं उनके structure formulas आपको must आने चाहिए। Write the name of the given compound. Given compound जैसे आपका अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड के आप बनाते हो, स्ट्रक्चर्स बनाते हो, तो फिर आपको उनकी नेमिंग भी आनी चाहिए। Give the content structure formula. What is the display structure formula? अब ये display structure formula ethanol का है और ethanoic acid का है। Describe the properties of alkene in terms of addition of reaction with। पहला आपका ब्रोमीन और एक्वस ब्रोमीन के साथ हमने अल्कीन का रिएक्शन करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन इन अ प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट के साथ। सी हमारे पास जो लास्ट है वो हमने स्टीम के साथ करवाना है इन अ प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट और ड्रॉ द स्ट्रक्चर और डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर द गिवन नेम, और उन नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड को हमने नेमिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। प्रोपाइन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन 2-ओल और लास्ट है मिथाइल प्रोपेनोएट। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय द रिएक्शन विद एक्वस KMnO4? Explain why ethene is used for welding. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Describe the manufacturing alkenes by cracking large hydrocarbons. लास्ट है हमारे पास हाउ इज पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एथेनॉल वाई फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम एथेनॉल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अल्कोहल इन मेडिकल इंडस्ट्री। डिस्क्राइब द कंबस्शन ऑफ अल्कोहल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज।